Today we are making oats pancakes because it's a very healthy recipe and people love eating oats, and today I'm sharing with you oats banana pancakes. For the recipe I'm just going to use one medium sized banana. I have already blended it or smashed it with a fork. I'm taking 1/4 teaspoon of baking powder. I have taken half cup of milk. It's not heaped, it's just a little bit, you see, it's less than half cup. I have taken 1 cup of oat flour, 1 egg, 1 tablespoon of sugar, and a teaspoon of vanilla essence, and half teaspoon of baking powder. Baking powder is very important in this recipe because it will make your pancakes seem very fluffy. ये आपके pancakes को बहुत soft, it will make your pancakes soft and fluffy. It's a very good breakfast. ये आपके नाश्ते के लिए बहुत अच्छा है. It's a breakfast recipe. If you don't know what to do with ripe, आपके पास अगर बहुत सॉफ्ट बनाना हो जाते हैं, वेरी राइप्ड बनाना, तो आप इसको इस ओट्स पैनकेक्स में तब्दील कर सकते हैं. अगर आपके बच्चों को शुगर, इफ़ योर चिल्ड्रन लाइक अ लॉट ऑफ शुगर or they like the pancakes to be extra sweet, you can either put आप मेपल सिरप का इस्तेमाल कर सकते हो, या जो है अगर आपके बच्चों को शुगर पसंद है तो आप 1 to 2 टेबलस्पून शुगर भी डाल सकते हैं. ठीक है, तो मैंने एक बड़ा सा बोल लिया है. आई हैव टेकन दिस बिग बोल. आई एम गोइंग टू मिक्स इट ऑल एंड शो यू. सकते हैं कि द पैनकेक बैटर इज़ एब्सोल्युटली रेडी. Everything is very well combined. The thing is that I forgot to, मैं आपको भूल गई बताने that I have also added a pinch of salt. ठीक है, जब भी आप बेकिंग करते हो तो आपको ज़रूरी है कि सॉल्ट का पिंच या 1/4 टीस्पून सॉल्ट ज़रूर डालना है. ठीक है, तो एक बिल्कुल ही अच्छा टेस्ट आ जाता है आपके पैनकेक्स में. चाहे आप पैनकेक्स बना रहे हो या केक्स बना रहे हो, बहुत ज़रूरी है कि आप पिंच ऑफ सॉल्ट ज़रूर डालें. पिंच या हाफ़ टी स्पून सॉल्ट या जो भी रेसिपी में मतलब टेस्ट इन्हांस करने के लिए आपको डालना चाहिए. ठीक है, तो अभी मैं इस पैनकेक बैटर को छोड़ रही हूँ फॉर तकरीबन 15 to 20 मिनट्स. फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि हम पैनकेक्स कैसे करते हैं. एक्चुअली इसके अंदर बेकिंग पाउडर डाला हुआ है मैंने, तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा ये रेस्ट करे. आप देख रहे हैं कि इसमें बबल्स आ रहे हैं. ये बहुत अच्छा रिजल्ट मतलब ये बताया, इट्स शोइंग दैट योर पैनकेक्स विल बी नाइस एंड फ्लफ़ी एंड इट विल बी सॉफ्ट. ठीक है, इफ़ यू वांट टू मेक इट विथ, आई हैव टेकन milk, ordinary cow's milk. ठीक है, इफ़ you're a vegan then you can take oats milk. आप almond milk यूज़ कर सकते हैं. आप कोई भी प्लांट बेस्ड मिल्क भी इस रेसिपी में शामिल कर सकते हैं. ठीक है, क्योंकि एवरीथिंग इज़ वेरी हेल्दी इन दिस रेसिपी except for the sugar that I have added, because I do not have maple syrup, or I don't have any sugar substitute right now with me, so that's why I have added a tablespoon of sugar in it. But even if you only use bananas, it will be a very good recipe. So guys, I have kept the stove on medium heat and I have placed the pancake. I have put 2 tablespoons of the pancake batter in this, and I have just taken the spoon and I've spread it like this in a circle shape, and I will let it cook for a few minutes till I get this brown color. So I'm going to now flip it. ठीक है, you can see it's nicely brown from the bottom. You just have to let it cook for 5 to 8 minutes. I have made 1, 2, 3, 4, 5 pancakes. It's perfect to eat for your breakfast. Anyone can prepare this. It's such a easy ingredient, right? It's so easy, guys. You can drizzle it with maple syrup. आप इसके अंदर maple syrup या कोई नटेला चॉकलेट क्या कहते हैं, सिरप या कुछ भी डाल सकते हैं. इट्स so delicious. So please give it a try. This recipe gets done in less than 25 minutes, and it's so simple and this every bite of this oat pancake is so healthy, guys. It's so healthy. So do give it a try.